friends, welcome to Ecoholics YouTube channel. My name is Avinash Agarwal, and in this video I'll be discussing with you important economics current affairs for 9th August 2024. So there is a very important development that happens quite frequently, that RBI comes up with monetary policy committee related developments, right? So उसी सिलसिले में there is a governor's statement gets released, right? And that is what got released yesterday, that is on 8th August 2024, governor's statement after the 50th meeting of monetary policy committee. अभी जो गवर्नर स्टेटमेंट होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट primary source of understanding what is happening in the Indian economy, what is happening in the global economy, how India will be impacted, and so on and so forth, right? और यही गवर्नर स्टेटमेंट एंड आरबीआई की अपडेट के ऊपर काफी काफी कमेंट्री होती है, काफी एनालिसिस होता है, काफी एडिटोरियल्स आते हैं, ओपिनियन कॉलम्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मुझे ये हमेशा एक चीज प्रॉब्लम लगती थी कि विदाउट फर्स्ट रीडिंग द गवर्नर स्टेटमेंट और विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आरबीआई इज बेसिकली थिंकिंग, हाउ डू वी स्टार्ट एनालाइजिंग और हाउ डू वी स्टार्ट रीडिंग ओपिनियन एंड एडिटोरियल आर्टिकल्स. वही प्रॉब्लम को मैंने आज रिजॉल्व करने के लिए जो है सीधा गवर्नर स्टेटमेंट ही आपके सामने रख दिया है. वैसे देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंट काफी बल्कि दिखेगा, बट मैं आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से ब्रेकअप करके पूरा का पूरा समझा के चला जाऊंगा, आफ्टर विच आप इसको काफी आसानी से रीड कर पाओगे. आफ्टर विच जो भी ओपिनियंस, एडिटोरियल्स, एनालिसिस आर्टिकल्स आप रीड करेंगे, सो यू विल हैव 200% अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is being said, why somebody is saying something that they are saying, etc. Right? So let us start with this governor statement. ठीक है. So the idea is that 50th मीटिंग हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का. फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो कि इंडिया ने 2016 में अडॉप्ट करा था, उसके अभी 8 इयर्स पूरे होने वाले हैं, राइट? एंड द गवर्नर इज सेइंग, एंड देयरफॉर योर ओपिनियन शुड आल्सो बी द सेम, कि ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, इसने काफी अच्छा काम करा है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट? एंड इस फ्रेमवर्क की सबसे खास बात यह है कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी भरा ये फ्रेमवर्क है, कि अगर ग्रोथ लो है तो हम ग्रोथ को सपोर्ट कर पाते हैं, और अगर इन्फ्लेशन हाई है तो हम लोग इन्फ्लेशन को टारगेट कर पाते हैं, राइट? तो ये दोनों चीजें हम लोग कर पाते हैं, राइट? तो पैंडेमिक रिलेटेड स्ट्रेस है, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं. यूक्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम टैकल कर सकते हैं फ्रॉम अ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, राइट? अगर इन्फ्लेशन हाई है तो हम इन्फ्लेशन को भी नीचे लाने का काम कर सकते हैं. सो एज ऑफ नाउ our growth is strong, we will see some numbers. As of now inflation is on a declining trajectory, we will see some numbers. And ये सारी चीजों की वजह से there is greater confidence in India's growth story, in India's policy approach. ठीक है. So जो डिसीजन लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो आरबीआई की रेपो रेट है, एंड व्हाट इज रेपो रेट? सो रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स. अगर आप रेपो रेट को इंक्रीज करोगे तो बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देगी जो कस्टमर से चार्ज करती है, एंड वाइस वर्सा. सो आरबीआई हैज केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, right? So therefore standing deposit facility, which is like reverse repo rate. So if you're a bank and if you deposit money with RBI, you get interest at standing deposit facility rate. Okay. So जो SDF rate है, that has remained unchanged at 6.25%, and MSF rate, that is marginal standing facility rate, is at 6.75%. What is MSF rate? So अगर आप बैंक हो, आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, so you can borrow from RBI up to a certain limit. बट अगर आपको अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक लगा है एंड यू नीड मोर मनी, राइट, देन आपको आरबीआई विल चार्ज अ पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एमएसएफ रेट, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. ठीक है. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड द कांसेप्ट्स ऑफ रेपो रेट, एसडीएफ रेट एंड एमएसएफ रेट टू यू, और एक्चुअल में रेट्स क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया. देयर इज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क, राइट? आरबीआई बोल क्या रहा है? आरबीआई बोल रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग अकोमोडेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, मीनिंग एट सम लेवल हम लिक्विडिटी को जो है टाइट रखने वाले हैं, राइट? अगर कहीं पर भी सरप्लस एक्सेस लिक्विडिटी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन स्टोक हो सकता है, वी डोंट वांट दैट, सो वी वांट टू विड्रॉ अकोमोडेशन, वी वांट टू कीप लिक्विडिटी अंडर टाइट कंट्रोल, राइट? बस का मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ को मार देंगे, हम ग्रोथ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो बैलेंस करने की आरबीआई यहाँ पर कोशिश करने लग रहा है. रिगार्डिंग सम इन्फ्लेशन नंबर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए.
सो इंडिया के अंदर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। सीपीआई कंबाइंड को हम लोग जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हाट इज सीपीआई कंबाइंड? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई रूरल का कॉम्बिनेशन सीपीआई कंबाइंड विच इज इंडियाज हेडलाइन इन्फ्लेशन। इस नंबर को देखकर, इस हेडलाइन इन्फ्लेशन को ट्रैक करके आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करता है, राइट। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई कंबाइंड वाज 4.8% इन अप्रैल एंड मई। अब वो 5.1% हो गया है जून 2024 के अंदर, प्राइमरीली बिकॉज फूड प्राइसेस इंडिया के अंदर कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, राइट। कोर इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आप इस सीपीआई कंबाइंड की बास्केट उठाइए, उस बास्केट के अंदर से आप फूड आइटम्स को माइनस कर दीजिए, उस बास्केट के अंदर से आप फ्यूल आइटम्स को माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग आइटम बचेंगे उसके थ्रू जो इन्फ्लेशन आएगा उसको हम कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। सो कोर इन्फ्लेशन के अंदर द प्रोडक्ट्स दैट वी यूज और द सर्विसेज दैट आर देयर इन कोर इन्फ्लेशन दे आर फेयरली स्टेबल, राइट। उनके प्राइजेस ना अचानक से ऊपर जाते हैं ना अचानक से नीचे जाते हैं, राइट। Food prices can suddenly go up, suddenly come down. Fuel prices can suddenly go up, suddenly come down. But other items, they don't exhibit so much volatility. इसको हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। सो कोर इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है। फ्यूल इन्फ्लेशन में वी हैव सीन डिफ्लेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफ्लेशन? ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन प्राइसेस, राइट। सो प्राइस वाज दैट्स 100 लास्ट ईयर एंड इज 95 लास्ट ईयर, so the change in price is minus 5%. That is the meaning of deflation. That the change in price is actually in the negative territory. That is the meaning of deflation. ठीक है? So headline inflation increase हुआ है because of food component. Core inflation moderate हुआ है. Fuel inflation deflation की territory में जा चुका है, right? Now why is it that RBI is worried? RBI ये बोल रहा है कि right now we are having favorable base effect. What is the meaning of favorable base effect? कि last year के prices were high, right? ठीक है? And this year के high prices, right? They don't appear high because last year के prices were high. So you are comparing this year का price with last year का price. Since last year का price was already high, so this year के high prices don't appear high in percentage terms. That is the meaning of favorable base effect. कि बेस की वजह से, लास्ट ईयर के प्राइजेस की वजह से थिंग्स आर लुकिंग गुड टुडे। जो हमारा थर्ड क्वार्टर आएगा, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो पीरियड आएगा, उसके अंदर फेवरेबल बेस इफेक्ट विल नॉट बी देयर। लास्ट ईयर के प्राइजेस वर कंट्रोल्ड इट सीम्स। इस साल के अगर हाई प्राइजेस रहे सो द नंबर्स विल लुक रियली बैड। दैट इज व्हाट ही मीन्स व्हेन ही सेज दैट फेवरेबल बेस इफेक्ट एग्जिस्ट्स इन द सेकंड क्वार्टर, राइट। जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर वी आर हैविंग फेवरेबल बेस इफेक्ट, बट इन द थर्ड क्वार्टर दैट इज अक्टूबर दिसंबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर, that favorable base effect will not be there. So we need to really focus on inflation. ठीक है, keep that in mind. If there is any doubt please ask. Domestic growth strong है इंडिया के अंदर, urban consumption strong है, rural consumption improve हो रहा है, investment demand is in the right direction, right? ऐसी परिस्थिति के अंदर monetary policy has decided to stay the course. They will focus on inflation and they will focus on bringing inflation down to the target of 4%. And that is why your repo rate has been kept unchanged. We want to bring inflation down in a sustainable manner in India. Once prices are in control, people are confident that prices will remain under control. People are confident that RBI will do everything that it takes to keep prices under control. That will lay the foundation for sustained periods of high growth, long periods of high growth. So the governor is reiterating. That we are going to keep a disinflationary stance. What is the meaning of disinflation? So if inflation was, let us say 7% or 8%, let us say, we want to bring it down to 4%, right? So inflation is very much there. The rate is still positive. On a year-on-year basis, prices are increasing, but prices are not increasing at plus 7% or plus 8%. Prices are increasing at plus 4%. That is what I mean by disinflation. So this is the graph that I would typically like to make in my theory classes, right? So this particular trend is that of inflation, where prices are increasing at increasing rate. This particular phase over here is disinflation, where prices are increasing but at decreasing rate, right? And this is what I refer to as deflation, that prices are decreasing because now there is a negative change in prices, right? So on the y-axis, you have rate of change, right?
of prices. Let us say on the x-axis you have months, let us say, right? So you see that +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9. This is inflation, right? This is inflationary trend. You're bringing it under control. So from, let's say, +9, it comes down to +8, +7, +6, +5, +4, +1, so on. This is disinflation. And if it goes below zero, -1, -2, -3, this is deflation, right? So RBI is right now sliding over here on the disinflationary stance, where it is bringing the inflation down in India from, let's say, above 6% to close to 4%. This is what I mean by disinflationary stance. If there is any doubt, please ask, right? Very quickly, I will speak about global growth, right? So there is a steady but uneven expansion. Manufacturing के अंदर स्लो डाउन है, सर्विसेज इज होल्डिंग अप. इन्फ्लेशन दुनिया भर के अंदर जो है कम हो रहा है धीरे धीरे, राइट? दुनिया भर की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर देयर इज डाइवर्जेंस. जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, दोस कंट्रीज हैव रिड्यूस्ड देयर पॉलिसी रेट्स. जिन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन इज स्टिल ऑन द हायर साइड, they have kept their policy rate up. So some countries are having expansionary monetary policy, some countries are having contractionary monetary policy. So you see divergence in monetary policy across jurisdictions. There is some volatility in financial market. Recently Black Monday was observed in Japan. There was some panic across tech stocks in US, right? So there is some volatility in the financial market as well. But in general, the near term outlook is still positive, right? There are certain challenges to medium term. RBI has not once mentioned the word recession anywhere in their commentary, right, in terms of what is happening in advanced markets. So I don't think that we need to be worried about that. Medium term challenges are because of demographic shift. Countries are becoming older in terms of age, climate change related issues, geopolitical tensions, especially in West Asia, fragmentation of supply chains because of Russia and China, the kind of attitude Western countries are having towards them, rising public debt, new technologies such as artificial intelligence coming and disrupting how you do business, how you live life, etc., etc. So, keeping in mind these medium term challenges, we need to have a coherent policy approach in which monetary policy needs to play its appropriate part. That is what the governor is saying. So, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. Very quickly, I'll speak about domestic growth, right? So Southwest, so from a supply side point of view, there are good things. Southwest monsoon is doing well. Kharif sowing is going well. Reservoir levels are good. Buffer stock levels are good. So from a supply side point of view, things seem to be going in the right direction. So उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. From a demand side point of view, index of industrial production is showing strong growth. Purchasing managers index is showing strong expansion. So manufacturing ka PMI is also doing good. Service sector ka PMI is also doing good. So purchasing managers index, if it is above 50, that means that it is showing expansion, it is showing growth. If it is below 50, it is showing contraction or it is showing a problem. So both PMI, so manufacturing ka PMI as well as services ka PMI are strongly above 50. Right. In fact, services ka PMI has been above 60 for 7 consecutive months, which in itself is a very big thing, right? It's a very positive thing. Okay. So rural demand seems to be picking up, right? Urban demand is strong. Government ka focus on capital expenditure is strong. So investment is also expected to remain strong. Private corporate investments को government ने काफी pull करने की कोशिश करी है. So that seems to be picking up. Merchandise exports has expanded in June, right? But उतना ज़्यादा तेजी से expand नहीं हुआ, right? Non-oil, non-gold imports have expanded, which is a positive for the Indian economy, because अगर India import करता है तभी हम export करते हैं, right? So we have to import because we don't have everything that we need to export. We don't have everything that we need for our own domestic production. So if our non-oil, non-gold import is going up, उसमें tension लेने वाली बात नहीं है. It's a positive thing. It indicates that our factories are actually working when this import goes up. So expansion of non-oil, non-gold import, it shows resilience. It shows that things are going to go in the right direction. Services की exports ने double digit की growth record करी. This is nothing new. We have been experiencing this for 2 decades and we should continue to experience this for as long as we can, right? So all in all, the conclusion is that agricultural activity with the rural consumption will be in the right direction. Services activity with the urban consumption will be in the right direction.
ये सारी चीजों ध्यान में रखते हुए आरबीआई इन माय ओपिनियन हैज गिवन अ कंजर्वेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर of 7.2% for the entire year. I'm not discussing the quarterly breakup because that is not required from our point of view. All you should remember is that from a real GDP growth standpoint, RBI is looking at a growth of 7.2% in the entire year, right? इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हेडलाइन नंबर इंक्रीज होकर 5.1% हो चुका है. फूड इन्फ्लेशन की वजह से ये हो रहा है. फ्यूल इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी कैटेगरी के अंदर है, राइट? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दीज थिंग्स टू यू, राइट? फूड के बारे में देयर इज ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट फूड. तो फूड इन्फ्लेशन जो है, फूड आइटम्स दे अकाउंट फॉर 46% ऑफ अवर सीपीआई बास्केट. अगर आप सीपीआई बास्केट के अंदर रखेगा गुड्स एंड सर्विसेज को देखेंगे, राइट? सो 46% ऑफ the items in the basket of this thing is are food items. मतलब बोलना मैं ये चाहता हूँ कि how do you measure inflation? So you create a basket of goods and services. आप इस basket का प्राइस निकालते हो, right, every month, right? So let's say that last year के आपके प्राइजेस निकले हुए, and then फिर आप इस साल के प्राइजेस निकालते हो, and then you compare this year's prices with last year's prices. You compare February this year का price with February last year, March this year का price with March last year, अप्रैल दिस ईयर का प्राइस विद अप्रैल लास्ट ईयर, मई दिस ईयर का प्राइस विद मई लास्ट ईयर, जून का जून, जुलाई का जुलाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये बास्केट बना हुआ है, राइट? जस्ट इमेजिन अ शॉपिंग कार्ट. ये शॉपिंग कार्ट है, इसके अंदर हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्लेस कर रखे हैं. सो 46% ऑफ दिस शॉपिंग कार्ट कंसिस्ट्स ऑफ फूड आइटम्स, 46%, राइट? And these food items, they have accounted for 75% of the headline inflation in May and June, meaning that these food items are the culprits for rising prices in India, is what RBI is saying. Vegetable prices increase हो रहे हैं इंडिया के अंदर, right? So we need to do something about it. Now, should we, like economic survey said, that should we ignore food items? Should we drop food items out of the consumption basket, right, while we are targeting inflation in India? So RBI has clearly said that we are not going to do this, right? So the idea over here is that continuing food price shocks, right, की वजह से हमारी जो disinflation की speed है वो उतनी अच्छी नहीं है, meaning that we are trying to come down from let us say +6% to let us say +4%. This is disinflation that we are trying to engineer, और ये disinflation we are not able to engineer. Why? Because food prices are not coming under control, right? Food prices को हमारे को कंट्रोल में लाना है. RBI is very clearly saying that food inflation will not be ignored. It cannot be ignored. Why? Because public जो है, they understand inflation in the form of food inflation. उनको कोई मतलब नहीं है कि स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट एटसेट्रा का प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहा है. उनको कोई मतलब नहीं. उनको मतलब है कि मेरा टमाटर, प्याज, आलू, शक्कर, गेहूं, चावल, दाल, ये सब का प्राइस क्या चलने लग रहा है, right? So people understand, public understand inflation through food inflation. If food inflation remains high and we start ignoring it, right, that means that things will become problematic. Why? Because अगर food inflation high है तो लोग ये समझेंगे कि सब चीज का भाव बढ़ गया है, everything is becoming pricier. So people will start demanding higher and higher salaries, higher and higher salaries. Why? Because their inflation expectation has become unanchored. उनको लग रहा है कि prices तो आसमान छू रहे हैं, right? Unanchored, right? You must have heard these statements, right? That prices are skyrocketing, price जो महंगाई जो है आसमान छू रही है, etc. If people are saying this, that means that उनको ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है. उसकी वजह से क्या होएगा, right? Spillovers होगा. How will spillovers happen, right? That people will demand higher and higher wages. That means that production cost will go up. That means that firms will have to pass on higher prices for goods and services to their consumers, and that means that actual में inflation आ जाएगा, actual में price rise हो जाएगा, and it will become sticky. Sticky in the sense that then it will be very difficult to bring it down, because now it is a part of your expectation, right? And once that expectation is there that ऐसा हो रहा है, then it becomes very very difficult. Are you getting my point, right? So RBI is saying that we could have ignored food inflation had food inflation been transitory, कि आज आया 15 दिन बाद चला गया. That is what I mean by transitory. That food prices increase today, but they will come down after 15 days. So had this been happening, we could have ignored food inflation. But in India, food inflation is persistent, right? So it is impossible to ignore it, and we will not ignore it, because spillovers and second round effects आएंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर explain करा, and they will become very difficult to manage. Okay.
I'm not discussing this liquidity and all this arrangement, etc. From a financial stability point of view, India's banks are well capitalized. They have strong buffers. Their balance sheets are unclogged. Only yesterday's lecture के अंदर we spoke about bad bank, NARCL, IDRCL. If you have not seen yesterday's lecture, please do see yesterday's lecture. Right? RBI is saying that we have to be vigilant with banks. We have to continuously try to identify potential risks and challenges and take proactive mitigative steps. Right? There are a couple of challenges that banks are facing, right? इसके बारे में काफी बातचीत हो रही है इंडिया के अंदर कि लोगों ने अब बैंक के अंदर एफडी करना और सेविंग डिपॉजिट में पैसा रखना बंद कर दिया है. People put money into mutual funds, people put money into alternative investment funds, into REITs, people put money into physical and other kinds of assets. They don't put money into banks so easily these days, right? So banks के सामने challenge है funding का, because if they don't have deposits, then how will they give credit, right? So banks are being forced to take up short-term non-retail loans. Now these short-term non-retail deposits, sorry, not loans, deposits. तो अब ये short-term non-retail deposits क्या है, that I need to elaborate on in a different lecture. But what RBI is saying is that this idea that credit growth is happening but deposit growth is stagnant. So banks are, attracting non-retail deposits. This can be a problematic idea. So we need to focus upon structural liquidity issues. We need to make sure that banks have good liquidity, for which RBI has suggested that banks need to come up with innovative products and service offerings, and that banks need to leverage their branch network. Meaning that एक तो अच्छा product बनाओ, innovation करो, and then you will probably have to actually push the product to people and mop up deposits, right? Apart from that, फ्रॉम अ क्रेडिट स्टैंड पॉइंट पर्सनल लोन्स के ऊपर आरबीआई बहुत विजिलेंट है. पर्सनल लोन्स, विदाउट कोलैटरल लोन्स विच आर बीइंग गिवन बाय अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, 18%, 24%, एटसेट्रा, राइट? आरबीआई इज वेरी वरीड अबाउट दिस कैटेगरी, बिकॉज आपने एक बार लोन चिपका दिया, सामने वाले ने लोन रिपे नहीं करा, एंड ये प्रॉब्लम अगर स्प्रेड हो जाता है, देन दिस कैन बी अ मैसिव प्रॉब्लम, राइट? So RBI is saying that certain segments of personal loan के अंदर अभी भी high growth है, so assessment and calibration की requirement है, and most importantly post sanction monitoring की requirement है. Another category of loans that RBI is not very happy with, it seems, is top up loans, right? So आजकल काफी सारे अच्छे बैंक्स भी top up housing loans provide कर रहे हैं, top up personal loans provide कर रहे हैं, top up gold loans provide कर रहे हैं. So what are these top up loans? So banks are saying that, if your EMI payment track record is good, then we are willing to offer you more loans, right? But RBI is not very happy with this kind of an approach. They're saying that, you have to keep in mind the loan to value ratio, कि अगर आपने कोलैटरल 100 रुपए का रखा है और आप उस पर 70 रुपए का लोन दे सकते हो, तो आपने अगर 100 रुपए का कोलैटरल रखा तो आप उस पर 70 रुपए का ही लोन दे सकते हो. यू कैन नॉट गिव मोर देन 70 रुपीज वर्थ ऑफ लोन, right? So loan to value ratio has to be adhered to. Risk weights have to be kept in mind, right? That what category of person is taking a loan for what purpose, etc. We have to monitor the end use of funds, because if I may be taking a loan in the name of housing loan, but I am using that money to, let us say, do satta in the stock market, hypothetically, then that is unacceptable. That should not happen. So monitoring of end use of funds is very, very important, right? It shouldn't happen that you're borrowing for one purpose and you're diverting the usage of that fund for another purpose, right? Another thing that RBI is worried about is the IT outage. So Microsoft का जो outage हुआ था recently, right? So RBI is saying that, boss, we have been speaking about this. There is a growing dependence on big techs. There is a growing dependence on third-party technology solution providers. So RBI is very clearly saying that banks need to have a proper risk management framework for their IT, cyber security, and third-party outsourcing arrangements. And most importantly, banks need to have a proper business continuity plan in place, that under no circumstance will their operations go down. इस प्रकार का plan of action आपको बनाना है, which is called BCP, that is business continuity plan. From an external sector point of view, we are in an okay territory. हमारे को कोई ज्यादा tension नहीं है. Our current account deficit was as low as 0.7% in 23-24 as compared to 2% in 22-23. So when current account deficit comes down, that means that our import and export are, managing themselves. Balance है उनके अंदर, right? So we had a lower trade deficit, right? And we had robust services and remittances का receipts.
ये सब हम थियरी के अंदर डिस्कस करते हैं. दिस नीड्स टू बी इलैबोरेटेड. इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम लर्नर, if you have any doubt, please get in touch with us. We'll help you. Right. So this current account deficit will remain within manageable space going ahead is what RBI is saying. Right. उसके अलावा certain additional measures have been highlighted. Right. Which I don't think कि मेरे को आपको एकदम बिठा के पढ़ाने की जरूरत है. You can have a look at it. It's not very important from a long-term perspective, from an understanding perspective right now. Right. So what is the conclusion? Conclusion is that inflation and growth बैलेंस तरीके से चल रहे हैं. ग्रोथ इज रेजिलिएंट, इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन. सप्लाई साइड शॉक्स स्पेशली फूड आइटम्स के अंदर जो है उसकी वजह से डिसइन्फ्लेशन इज टेकिंग इट्स ओन स्वीट टाइम इन प्लेइंग आउट. राइट. एंड दिस एंटायर डिस्कशन एंड्स विद अ फैंटास्टिक कोट बाय महात्मा गांधी which says that the slightest error of judgment, a hasty action or a hasty word may put back the hands of the clock of progress. Policies have therefore to be cautiously evolved. Right. It's a beautiful quote where RBI is saying that हमने बहुत मेहनत करी है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर. राइट. अब अचानक से अगर हम कोई हेस्टी जजमेंट, हेस्टी एक्शन, हेस्टी वर्ड कर लेते हैं और उसकी वजह से जो प्रोग्रेस है वो अगर पीछे चली जाती है, सो दैट विल नॉट बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. पॉलिसीज को हमारे को कॉशियसली इवॉल्व करना चाहिए, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी हमारे को कॉशियसली इवॉल्व करना चाहिए. All the footnotes of this particular speech has also been incorporated. So if you want to read the footnotes, be my guest. Right. I'll be sharing this entire governor's statement. This is my current affairs for today. In my tomorrow's lecture, I'll be analyzing everything that we have discussed today. Right. So थोड़ा सा आपको repetitive लग सकता है, but that's okay. Long term understanding अगर आपको develop करनी है, so you have to develop a stickiness for these points in your mind. That these points should not appear new to you. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम बिकमिंग रेपिटेटिव, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इफ आई एम बिकमिंग रेपिटेटिव दैट मीन्स कि आपके सामने ज्यादा नई चीजें नहीं आ रही है, एंड दैट मीन्स दैट कि थोड़े टाइम बाद यू कैन बी इंडिपेंडेंट. राइट. यू कैन बी इंडिपेंडेंट, यू डोंट नीड मी. द डे आई स्टार्ट बिकमिंग रेपिटेटिव फॉर 1.5 months, मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया, मतलब आपको अब करंट अफेयर समझ में आ चुका है. नाउ यू जस्ट नीड टू ब्रश अप करंट अफेयर्स वेरी क्विकली. सो कीप दैट काइंड ऑफ एन एंड गोल इन माइंड when you are listening to my lectures. We'll meet again tomorrow. Right. Until then, thank you so much. All the very best and Jai Hind to all of you. Take care.